Hello friends. As you are aware that CBSE 10th and 12th class result of session 2021 and 22 was recently out. In many schools the students have done really well. In my school also. Today I am sitting with the toppers of my school. I have Rohneet, who is the topper of science stream and has scored 95% marks in 12th standard, and I have Gurjot, who is the topper of commerce stream, and she has also scored 95% marks in 12th class commerce. अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जो +1 और 2 में अपीयर हो रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें कई बार सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, बिकॉज वी टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स कीप गाइडिंग दैम आउट ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस, जो कभी कभार आउटडेटेड हो जाते हैं, बिकॉज हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे टाइम के हैं. अभी इस साल रिसेंटली जिन बच्चों ने CBSE में टॉप किया है, अगर हम उनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे, उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, क्या क्या मेथडोलॉजीज़ यूज़ की, कौन कौन सी बुक्स रेफ़र की उन्होंने, उनका क्या टाइम टेबल, क्या शेड्यूल रहता था, तो आई होप इट विल बी अ वेरी रीसेंट एंड अ फ्रेश एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी. दैट इज़ द रीज़न आई हैव कॉल्ड बोथ ऑफ देम, ताकि ये लोग आएँ और अपने एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करें. अभी वी विल गो फॉर द सेकेंड राउंड वेयर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, राइट. आई वुड लाइक टू हैव द आंसर्स इन ब्रीफ, तो try to be as brief as possible so that this interview doesn't take long, but we hit the bullseye. That should be our target. So Gurjot, first of all, the role of teachers and school in your success. Teachers and school played an important role in scoring 95%, because whenever I was having any doubt, then I used to go to my teacher, and my teacher never refused to answer my questions. And I know that Vishal sir, my accountancy teacher, I daily used to go to him with a lot of queries in accountancy, and he never said no to me, and he also always answered my question very patiently, and I always listen to him, and I got to know about various things from him. Even other teachers also played an important role for me to getting 95% marks in 12th standard. And school? And school, yes, school, of course. School has also played an important role, because school has helped me to develop various skills such as communication skills and other skills also. These are also very much important in getting good marks, because in indirect way these skills help a student to nourish and to grow mentally and to develop merit skills. Therefore, both teachers and school played an important role for me actually in getting 95% score in 12th board exam. In which year and in which class had you got admission in this school? Since beginning I'm here, since my nursery class. I don't know the year. So since my beginning, it was a very wonderful experience staying in this school, because this school has provided me a lot of knowledge and other things. I was also an athlete, and I did well in that, and my teachers also encouraged me to do well in this. So I am complete academic and in sports field also. Very good. So admitted in nursery and completing 12th from here, at least 14 good year of your life you have spent in Darshan Academy, Dasuha. Right, nice to listen to that. Role of teachers and school, Darshan Academy in your success. I know you got admission in +1 over here, right? So you have spent 2 years with us, but in those 2 years, what role school has played and what the teachers have played? The school and teachers play a very important role in my and in my success and my characters. First of all, ये school है और teachers ने हमें एक morality भी हमें सिखाई, that हमें moral value सिखाया हमें. स्टडीज़ एक अलग तरफ थी, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने हमें मोटिवेशन दिया, इंस्पायर किया. उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी कि हाउ द पीपल इज़ चेंजिंग, हाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, एंड हमें वो चेंजिंग वर्ल्ड के साथ कैसे चेंज करना है, कैसे एडजस्ट करना है. एंड वो हमको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते थे, इवन वाइल स्टडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस. एंड रही बात स्टडीज़ की, कि वो
रही बात स्टडीज़ की, स्कूल एंड टीचर्स का क्या क्या रोल रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो +1 +2 इज़ द बेसिक ऑफ फॉर हायर स्टडीज़। तो टीचर्स ने हमारा जो बेसिक है बहुत अच्छा बिल्ड किया है। तो अगर बेसिक अच्छा होगा तो आगे की जो नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो इन्होंने हमारा जो बेसिक है बहुत अच्छा बनाया है। एंड इवन इनका एंड टीचर्स का जो पढ़ाने का मेथड होता है दैट इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग। वो बहुत अच्छे फ्रेंडली तरीके से हमें समझाते हैं एंड हमें कभी भी हेजिटेट नहीं हुआ उनसे क्वेश्चन आस्किंग से। सो टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड उन्होंने हमारे मॉरल वैल्यूज़ दी, इंस्पिरेशन दिया हमें। एंड इसके साथ साथ आई वांट टू से दैट हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें, जब हमारा जो डार्क फेज था, अगर कोई हमारे फैमिली प्रॉब्लम थी या फिर हमारे कोई सोशल प्रॉब्लम थी, उनमें भी हमें वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। सो आई रियली थैंक्स द स्कूल प्रिंसिपल सर एंड टीचर्स ऑफ दर्शन अकेडमी दसूहा। थैंक यू। मैं प्रिंसिपल का रोल नहीं पूछूंगा, नहीं तो वो बटरिंग हो जाएगी। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्यूशंस इन योर सक्सेस? Actually, I never take any tuitions in my +1 and +2 because I never felt like taking tuition classes because teachers in the school were very good and very supportive also. If I was having any query, then next day I used to come to the teachers and then ask the doubts, and the teachers they explain everything in detail. So we face no problems actually in any kind of study material. So I think tuition is a wastage of time because instead of studying in tuition classes, one should study at home. One should do self study, because while doing self study one come to know about various facts and figures which one cannot reveal at the tuition classes. And while doing self study one can come to know about various questions and find those the answers of those questions. And the foremost thing is that the teachers were very supportive at the school. That's why I never took any tuition classes. Good. And role of tuitions in your success? I also never took the tuitions, and I felt that tuitions are also time waste, like she said. But in tuitions we repeat the same syllabus as that we repeat in our school. So that is really a time waste. So अगर हम वही सिलेबस अपने हिसाब से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और उसको ज़्यादा टाइम देंगे, जो हम योर टाइम हम ट्यूशन में लगाएंगे वो टाइम अगर हम सेल्फ स्टडी में ज़्यादा लगाएंगे तो डेट इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो आई थिंक ट्यूशन उनको ज़रूरत पड़ती है जिनका बेसिक ही नहीं क्लियर है एंड वो जो टीचर के साथ जो नहीं साथ चल सकते। तो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं अगर वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज उनका बेसिक ही नहीं पूरा तो आई थिंक उनके लिए ट्यूशन्स की ज़रूरत है। बट टीचर्स आर वेरी सपोर्टिंग। उन्होंने बेसिक बहुत अच्छे से करवाया एंड और हमारा जो सिलेबस है हमारे साथ कंप्लीट कराया जितना। अगर जब हमें लगा कि ये फास्ट सिलेबस जा रहा है तो हमने टीचर्स को कहा कि स्लो हो एंड उन्होंने स्लो भी किया। और जहाँ पे लगा स्लो है तो हमने टीचर्स को कहा थोड़ा फास्ट कीजिए, हमें रिवीजन कराइए। तो जैसे जैसा हम कह रहे थे वैसे टीचर्स जैसा टीचर्स करते थे ओके वैसा हम करते थे। तो मुझे ट्यूशन्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर ऑल दोज हु फील कि ट्यूशन्स पर जाने के बाद ही मार्क्स आते हैं। इन दोनों बच्चों ने बिना ट्यूशन के सेल्फ स्टडीज़ से और जो भी इन्हें टीचर्स ने पढ़ाया उसकी हेल्प से मार्क्स गेन किए हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। विच बुक्स डिड यू रेफ़र फॉर योर +1 and +2? I preferred only NCERT books because NCERT books are very helpful for getting good marks. In NCERT book, there's given detail of everything, and one has to not read any other book. I feel this. Whereas few students feel that one has to cover up other books also, which is totally wastage of time. So if you have completed your NCERT book, then only go to the sample papers. And if you are doing sample paper before reading the NCERT books, then it is the wastage of time. And my peers also were doing the same practice. They were solving the sample papers without reading the NCERT book, and they were
totally a mess because they were all confused. They're not knowing that which type of question is this and what is the solution of the question. So read NCERT book, and there is no need to read any other book instead of NCERT. And after reading NCERT book, start preparing for your exam by solving sample papers and previous year questions. Your books which you preferred? आई ओनली प्रेफर NCERT बुक्स. जैसे मैंने पहले कहा था कि NCERT बुक्स इज़ लाइक अ पजल. अगर हम जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे हमारा उतना दिमाग खुलेगा, हमारा उतना IQ भी इंक्रीज़ होगा, हमारा उतना जो दिमाग है वो टेक्निकल एंड साइंटिफिक बनेगा. सो आई थिंक NCERT गिव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट फॉर अ स्टूडेंट to make its mind as scientific thinking and to increase its IQ. I think only NCERT is good. Good beta. What was your preferred time to study and how much time did you devote to study? Two things. पहले study का preferred time क्या था? Actually, I used to study at night because I feel that at night the atmosphere is very peaceful and nobody is awake and no one is there to disturb me. So I prefer studying at night, and I used to study 6 to 8 hours a day. And most of the time it was night time, as I said before, that it was a peaceful atmosphere. And in my house there is a lot of hustle bustle and a lot of disturbance around, so I used to do my studying stuff in the night and used to sleep in the morning, and it helped me a lot because while studying in the night I used to consume the knowledge very easily, whereas while studying in the morning it become very difficult for me to study and to focus on the materials, whereas if I feel that I'm lacking behind the accountancy practice, then I used to do that in the afternoon, whereas most of the time I used to study in the night. Right. So studying at night, because it is peaceful, even I believe that when you study, if you study at that time when the whole world is sleeping, nobody will disturb you. So it can be the night time, when we call it after 10 or after 12, and it can be the early morning time as well, like 3 a.m. 4 a.m. when the whole world is sleeping, so that you can study peacefully and whatever you study gets very well into your mind. So she opted for night. Some other people or the students can opt for early morning also. It depends upon you how it suits you. Rohit, your time of preferred time of study and how much time did you devote? मैं ज़्यादातर शाम को पढ़ता था. बेसिकली मैं जैसे मुझे भी डिस्टर्बेंस नहीं पसंद थी, इसलिए मैं घर से दूर जाकर पढ़ता था. घर से दूर जाकर पढ़ता था. उसमें फिर सब घर के दूर एक वहाँ पर एक खाली सी जगह मंदिर के सामने, तो वहाँ पर जाके पढ़ता था. वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं थी. तो फिर तो बेसिकली वहाँ पर लेकिन वहाँ पर जो पढ़ता था वो सिर्फ वहाँ पर सिर्फ मैं होता था और मेरे आइडियाज़ होते थे वहाँ पर. जैसे कि मैंने ऐसे पढ़ना है कि मैंने पहले बुक पढ़ी. उस बुक को पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने अपने को, जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर की तरह पढ़ाता था, तो ऐसे में जब मैं अपने आप को पढ़ाता हूँ, मतलब अपने आप को जब पढ़ाता हूँ मैं, तब बेसिकली हमें एक बिल्कुल क्लैरिटी मिलती है एक थ्योरी के बारे में. साथ साथ में हमसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं. जैसे कि टीचर पढ़ाता है और बच्चों में डाउट होता है, तो वैसे ही जब हम अपने आप को पढ़ाते हैं हमारे अंदर भी डाउट्स आते हैं हमारी टीचिंग के लेकर, और जो हमसे छूट जाता है वो जो डाउट जब हम खुद क्लियर की कोशिश करते हैं, तो हम दोबारा उस रेफरेंस को पढ़ते हैं, और जिससे कारण को जो पॉइंट्स जो छूट जाते हैं वो नहीं छूटते. और उसके साथ जो मैं क्या कहता था, वो किसी भी चीज़ के साथ कोई भी थ्योरी पढ़ी, उसको मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मैंने करना है. इस चीज़ की क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो. मुझे कोई भी नई थ्योरी मिलती थी, मैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखता था. तो उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को सोचना, फिर जब हम उसके बारे में सोचता था उसको कैसे इंस्टॉल करें, उसमें भी क्वेश्चंस आते थे. तो इसी कारण जो क्वेश्चन होते बिल्ड होते थे. एंड प्रेफर्ड टाइम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 2 आवर्स, बिकॉज मैंने कहा कि मैं 2 घंटे का जो काम था वो मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर देता था बाय स्मार्टली, उस चैप्टर को क्वेश्चंस की फॉर्म में राइट कर. सो देयरफॉर उसके कारण मेरा काफ़ी टाइम बच जाता था.
तो आई थिंक 2 आवर्स अगर हम उसको स्मार्टली करें, बहुत एफिशिएंटली करें, लेकिन उस 2 आवर्स के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आवर्स मैंने कहा कि मैंने उस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ा, फिर उसमें से क्वेश्चन ढूंढे, एंड उस 2-3 बार पढ़ने को भी काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी टाइम चाहिए होता। सो स्मार्ट वर्क के लिए भी हार्डवर्क चाहिए, एंड इट मीन्स कि अगर मैंने कहा कि मैंने स्मार्ट वर्क ज़्यादा किया, लेकिन उसके साथ साथ मेरे हार्डवर्क भी मुझे करना पड़ा। सो हम हार्डवर्क से पीछा नहीं छोड़ सकते। सो हार्डवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अब हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, बिकॉज हमारे पास सिलेबस ज़्यादा होता है एंड एग्ज़ाम्स के साथ टाइम कम होता है। तो हम कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर करें, वो बहुत हमें स्मार्टली करना होता है। एंड मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के दिन में अपने ही क्वेश्चन सॉल्व करके जाता था, एंड जिसके कारण मुझे फुल क्लैरिटी मिलती थी एंड फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में होती है, जिसके कारण अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। गुड, वेरी गुड। हाउ मच डिड यू राइट? लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि लिख के पढ़ना चाहिए, क्लास में भी जब टीचर पढ़ाता है तब भी लिखना चाहिए, और जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तब भी हमें लिखना चाहिए। आई हैड द टीचर्स हु यूज्ड टू से कि लिख के किताबें भर दो, कॉपियाँ भर दो, बाद में रद्दी बेचोगे बहुत पैसे मिलेंगे। सो हाउ मच डिड यू प्रेफर टू राइट इन योर क्लास एंड ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी? Actually, while I'm in the class, I didn't write much because I used to concentrate on what teacher is teaching. And when I used to go back to home, then I was the same that who write a lot, because for me, I don't know how to memorize things, because it is very difficult for me to memorize things. Whereas I used to read the chapter once and then write the notes and even the main points on the notebook. And sometimes I used to write the whole chapter in a notebook, which helped me to memorize the concept for a longer period of time. And if I talk about accountancy, then it requires a lot of practice. Yes, then for accountancy you have to write a lot, you have to practice a lot for getting good marks. Whereas in business and economics, in business you have to make a heading and then you have to make subheadings of the points, and then you have to elaborate those points so that you can memorize well. And in economics you have to write the definitions and your detail of those definitions in your notebook, so that while revising it on your exam day you don't feel any stress on you and you get it very easily. गुड। एंड ऑन लाइटर नोट, रद्दी के पैसे कितने मिले? चलो, जस्ट जोकिंग। एंड योर्स, हाउ मच डिड यू राइट इन क्लास एज वेल एज सेल्फ स्टडी? मुझे लिखने की आलस था, तो मैं ज़्यादा लिखता नहीं था। तो बेसिकली क्लास में तो नहीं लिखते थे हम, बट लेकिन जब हम घर पे होते थे तो लिखने की प्रैक्टिस सिर्फ मैं अगर बात करूँ बायोलॉजी की, जब कुछ हार्ड टर्मोलॉजी होती है जो कि नहीं याद होती थी, तो उसको लिख के याद होता था। और कभी मैंने आंसर्स नहीं लिखे, और जब इंग्लिश में कुछ आंसर्स कहते हैं प्रैक्टिस करो लिख के, तो फिर मैंने उतनी नहीं लिखा। मैंने क्या किया था, मैंने आंसरिंग स्किल्स डेवलप की थी कि मैं कैसे अपने आंसर को पहले पैराग्राफ में लिखूं, फिर कैसे उसको एक्सप्रेस करने के लिए, फिर उसको मतलब कि ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने के कैसे फिर मैंने टेबल्स क्या, ग्राफिक्स यूज़ किए मैंने, फिर आंसरिंग स्किल्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा अपन फोकस किया था, जिसके कारण जो मेरी कमी थी कि मैं कम लिखता था और मुझे लिखने में थोड़ी सी आलस थी, वो उसके कारण मेरा वहाँ पर ओवरकम हो गया था। लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि लिखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब लॉकडाउन में लिखने की आदत सबकी बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो उसके बाद दोबारा लिखने की आदत को डेवलप करना वो थोड़ा मुश्किल था। तो फिर क्या हुआ, उसको करने के लिए पहला कुछ लिखा, जैसे बायोलॉजी में कहा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। और रही बात साइंस की, साइंस में इतना साइंस में ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, वहाँ पर सिर्फ जो पॉइंट टू पॉइंट्स आंसर देना पड़ता है। तो इसीलिए जो साइंस में ज़्यादा लिखने की तो इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। अगर हम बात करें इंग्लिश की और फिज़िकल एजुकेशन की, वहाँ पर हमने फिर अपना जो आंसरिंग स्किल्स थी थ्रू ग्राफिक्स उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा लगे और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे। साथ में क्या है, मैंने अपना थोड़ा मैंने लिखने की कोशिश की, पेपर के
15 दिन पहले फिर मैं लिखने की कोशिश की थी। जैसे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आ चुका है, उसको मैं लिखने की कोशिश की थी कि उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकें। और हर बार था कि हर बार मैं ये कहता था कि जो मैंने इस बार जो अपना जो सोचा है कि इस फॉर्मेट में मैंने पेपर लिखना है, और जब अगली बार मैं इसे बेटर करूँगा। प्री बोर्ड्स में मैंने जो सोचा था मैं कहूँगा हाफ ईयर में इससे बेटर, तो फिर बेटर करते जो हमारा जो मास्टरपीस होता है वो हमारा बोर्ड में मिल जाता है। तो इट मीन्स ऑलवेज ट्राई योर बेटर, और हमें हमेशा ऐसा सोचना चाहिए जो मेरा आज का जो कल का जो दिन होगा वो मेरा आज से बेटर होगा। हमें सिर्फ यही सोचना पड़ेगा कि हमें रोज़ बेटर करना है, एंड आपको एक न दिन मास्टरपीस जरूर मिलेगा आपको। Right. What was the role of internet in your success? Actually, internet also played a vital role in scoring good marks, because whenever a student is feeling that he or she is not able to get the concept, so one can go through the YouTube or other Instagram or other apps on internet to get the meaning and to get conceptual clarity of that content. And through internet, most of the students use internet not for studying, but they do everything on internet, but they don't study on internet. This is the wastage of time, and time is very precious. Time once gone, never come back. So one should utilize the time very well, and you use the internet for good purposes, for studying purpose. And whenever you're feeling any doubt and you're away from your teachers and you're not having any other source, then use the internet to clear your doubts and do well in your exams. Right, brother. Ronit, role of internet in your success? मैंने इंटरनेट को अपने दोनों मेथड से किया है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। बट जो मेरा ज़्यादा पोर्शन था वो पढ़ने के लिए था। आज जैसे मैं कहा कि क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आंसर खुद ढूंढने की भी मैंने प्रैक्टिस की। तो वो जो मेरे में जो क्वालिटी है, आंसर्स को खुद डेवलप करना, क्वेश्चंस बनाना और उसमें से आंसर्स खुद डेवलप करना, और कई बार आंसर्स ढूंढते क्वेश्चंस के नए क्वेश्चंस को मिल जाना, फिर उनके आंसर ढूंढना, तो फिर उसमें इंटरनेट ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। साथ में जैसा मैंने कहा आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप की मैंने, तो मैंने इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स के आंसर शीट देखी, तो वो कैसे क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करते थे, और मैं हमेशा उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता था। मैं सोचता था कि इनसे बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर इन्होंने जो टॉप पॉइंट छोड़े हैं वो मैं पॉइंट्स उनमें कौन से पॉइंट छोड़े हैं, तो वो मैं पॉइंट्स कैसे इनमें ऐड कर सकता हूँ। तो फिर इंटरनेट में ये किया कि सबसे पहले कि एक अपनी आंसर की को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उसके अपना कंटेंट, सबसे पहले कंटेंट को एक्सप्रेस करना, दूसरा कंटेंट को क्या कंटेंट है उसको समझना, उसके लिए भी मैंने इंटरनेट का यूज़ किया। ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो कि एनसीईआरटी में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं और उसमें इतनी नॉलेज भी नहीं होती, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ वही बताता है जो एक +2 के लेवल तक होता है। बट कहीं में क्यूरियोसिटी होती है या फिर उसको पार्शियल नॉलेज के कारण वो अच्छे से समझ नहीं पाता, तो उसको कम्प्लीटली समझने के लिए हमें इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है। तो तब किया था, और साथ में एंटरटेनमेंट के लिए भी किया था, क्योंकि हमें साथ में सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहना चाहिए कि ट्रेंड लोग क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग में है, आने वाला देश का क्या कर रहा है, कि इंडिया कितनी डिजिटल हो चुकी है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। उसके साथ क्या क्या ट्रेंडिंग पे है ये भी सब कुछ जानना ज़रूरी होता है, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ कॉन्शियसनेस भी इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में। Thank you, बेटा। There were 2 phases in your life during this +1 and 2. You people are from that batch which can be actually termed as COVID batch, because you have got online education in both the years, in 12th standard and 11th. Maybe a little bit of time you have spent in school physically, but most of your education was online. So how would you correlate or differentiate between the online education which you got and the physical education? What do you find better? And also if you would like to share the experience of online education. Actually, physical classes are better than that of online classes, because while we are in the physical atmosphere, then there is no problem of network and all, and teacher, we can interact with the teacher physically without any undue difficulty. Whereas on the online classes, few of the students don't attend the classes. There are many reasons for this. For example, internet issues, and few also not attend the classes because they feel it boring and
other etc. So while we are on online platform, then the interaction between student and teacher cannot be done, and most of the time the situation is like student don't open their cameras, and it become difficult for the teacher to teach the students, and also for the student to get clear concept. So while a student is in the physical class, it become very easy for the student to understand the concept. Even the teacher can give extra knowledge to the students, whereas on the online classes I felt also that the time was very less, and we are running out of time, because in the online classes most of the time run while setting the mics and setting the phone cameras, whereas in the physical classes teacher directly come to the class, deliver the lecture, and then we all get to know about the concept. And in the physical classes the practice can be done more and more, because I've experienced it that when we are having online accountancy classes, then there was very little practice, because teacher was just able to convey the message and deliver the lectures, whereas while on the physical classes, whenever we are having any free time, then teacher used to give us time to practice the questions, and it helps me a lot to get good marks in accountancy especially. Right, beta. So you prefer physical classes over online classes, and you've shared the experience of the other students that they were not very interested and they were not very attentive during the online classes. What about you? Your own personal way of dealing with the online classes. How did you deal with the online classes? For me, the experience of online classes was also not very good, because in my house there was a problem of network issue. Because of that network issue, most of the time I was not able to attend the online classes, and whenever there is online classes, then parents used to think that it can be delayed or something like that. So few of the time I also used to skip the classes, and because of that I was not able to cope up with the syllabus and all. So according to me, physical classes are much more eligible than that of online classes, because in the physical classes a person can consume more knowledge than that of online classes. Right, beta. But still you manage very well. In spite of all these problems and issues, you have managed to score good. So that credit goes to you also. Ronit, your experience of online versus physical classes, your own experience. So according to me, physical education and physical classes is best. बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में हमें हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की कि हमें जो ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस में जो एजुकेशन है बहुत अच्छे तरीके से दी जाए. बट फिर भी जो ऑनलाइन क्लासेस की जो बात, ऑनलाइन क्लासेस जो फिज़िकल एजुकेशन की बात है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बनती. ऑनलाइन क्लास में हम चाहे अटेंड हो, बट हम पता नहीं कि हम फिज़िकली अटेंड है, कैमरा ऑफ करके कहाँ गए हैं. लेकिन जब इफ़ आई टॉक अबाउट माई, तो मेरी भी इंटरनेट प्रॉब्लम थी. इसके साथ साथ क्या होता है कि सीरियसनेस की कमी हो जाती है. जब ऑनलाइन क्लासेस है, आप मतलब कि टीचर्स फ़ोन के पीछे हैं, तो सीरियसनेस की कमी होती है. पता है कोई देखने वाला नहीं होता, तो सीरियसनेस की कमी हो जाती है उसमें. तो सीरियसनेस की कमी हो जाती है. एंड ऑल्सो ऑनलाइन एजुकेशन से इतनी अच्छे तरीके से जो एजुकेशन है उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता जितना कि फ़िज़िकल क्लासेस में किया जाता है. एंड उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट होता है, हम घर में रहकर अगर स्टडी कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और अगर हम स्कूल में रहकर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट. अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो ऐसे स्कूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती. अगर हम ऑनलाइन क्लासेस अगर पढ़ाई हो जाती, तो स्कूल इसलिए बनाया होता है क्योंकि वहाँ पर एक इन्वायरमेंट मिलता है टू स्टडी. सो physical classes is best because it provide education, an environment for study, environment for creativity, environment for think, environment for ask questions, and environment for acquire knowledge. I think physical classes is good, but teachers try a lot, give us 100% to deliver our education with their full efforts. Right, like he's sharing efforts of teachers. Did you feel कि हाँ teachers के efforts में कहीं कोई कमी थी कभी? No, teachers were always very supportive, and I never felt like teachers
were not making full efforts, because teachers were always there on the internet. Even the teachers also already said us that if you're facing any problem, you can contact us through the WhatsApp or through their personal mobiles. So we the student never felt like, even I never felt like that there was any problem because of the teacher, and teacher were giving full concentration. If we are not attending any classes, then teacher used to personally call us and ask the reason that why we are not attending the class. So teachers were very supportive. Good, beta. Good, very good. Now one more question which is there in mind of many students. What was your preferred way of studying? Like some students prefer to study on the study table and chair, some prefer to study on sofa, some prefer to study on bed, लेट के पढ़ना पसंद होता है किसी को. What was your preferred way of studying? Actually, I was not having any proper study table, but I managed to arrange a table for myself, and I used to sit on the floor and keep the table near me, and I used to sit near my study shelf, because bookshelf, because whenever I used to study, then there is curiosity in my mind that I'm not having this book and I have to cover this book. So I used to keep myself near my bookshelf, so that whenever I need any book, then I can go nearby my bookshelf and get that book. What about studying on the bed? Whenever I study on the bed, I feel very sleepy. So while feeling sleepy, it's impossible to study. So I never prefer to sit on bed and study, because it's a bad idea. Right. Ronit, your preferred way of studying? मैं खड़े होकर पढ़ता था, एंड इवन घूम घूम के पढ़ता था मैं. तो जैसे मैंने कहा था कि मैं घर से बाहर जब खुला था, जो खुला एक मैदान था, वहाँ पर जाकर पढ़ता था, तो वहाँ पर मैं घूम घूम के एज ए टीचर, जैसे टीचर घूम घूम के पढ़ाता है वैसे मैं पढ़ता था, एंड जिसके कारण मेरी बॉडी एक्टिव रहती थी, एंड उसमें जो आलस है, जो सुस्ती है, वो नहीं पड़ती थी, एंड बॉडी रिमीन्स एक्टिव. एंड उस समय जब बॉडी एक्टिव रहती है एंड उस टाइम आप एक टीचर की तरह पढ़ाते हैं, तो उस टाइम आई थिंक दैट इज़ गुड एनवायरनमेंट फॉर स्टडिंग. Very good. So we'll wind up the interview with the last question. What is your future plan? Actually, in future, I want to go to abroad and study and come back to India and want to establish my own business in India. So you want to be an entrepreneur? Yes, sir. Very good. Ronit, your future plan? My future plan is to do research, and I'm going for research. So after research, I think I would go to politics or an IAS, because as I said that I was very good in debating and asking questions like why this happens, this is wrong. So after research, after good and satisfied research, I will go to the IAS or politics. I think research, politics, and IAS. Yes. So very good. You people have your goals set, and you have already taken the required steps in the direction of achieving your goals. Best wishes from my side, from Darshan Academy Dasuha, as well as all the teachers side, and congratulations to both of you as well as your parents for scoring so good. And like I said, best wishes for your future. I know you will make us proud in future as well. Thank you very much for sharing your valuable time, because I know these are the questions which may be in the mind of many students, जिनको वो आम तौर पे किसी से पूछ नहीं पाते हैं, अपने टीचर्स से या पेरेंट्स से या एल्डर ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड्स से. But I hope you have satisfied many of their queries. Still, if there are any more queries, I request the viewers, they can ask in the comment box, and if it will be possible, I may get the answers from these two very talented students and give it to you in the same comment box. तो आपके मन में कोई भी queries होंगी, आप खुलकर comment box में उनको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं. We'll try to provide you the answers of those queries also. With this, thank you very much, both my kiddos. Thank you audience. Take care. Bye bye. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Principal Rasik Gupta. Thank you.